Assalamu alaikum. As you all know that we already have discussed the topic respiration, including its types. What was respiration? It is a biochemical process in which we get energy by using glucose and oxygen and the release of carbon dioxide and water. So उसकी two types हमने देखी थी, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic occurs in the presence of oxygen, while anaerobic occurs in the absence of oxygen. दोनों का difference हमने देखा था detail. Now today we are going to discuss the types of anaerobic respiration. So depending upon the products which are formed during this process, two products were formed during this process: ethyl alcohol and lactic acid. So on the basis of these two products, we have two types of fermentation: ethyl alcohol fermentation and lactic acid fermentation. So depending upon the products, there are two types: ethyl alcohol fermentation and lactic acid fermentation. This process, the anaerobic respiration, is also known as fermentation. Now, what is ethyl alcohol fermentation? Now, inshallah, we are going to discuss both these types one by one. What is ethyl alcohol and where does it occur? It occurs in bacteria and yeast. जितने हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब काम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई चीज़ बनाते हैं, तो ये जितना का जितना जो प्रोसेस है ethyl alcohol का, दैट इज अकर इनसाइड बैक्टीरिया और yeast, नेचुरल प्रोसेस. So because fermentation or respiration, it occurs in two phases. In one phase, glucose broken down into pyruvic acid. So अब जब पायरोविक एसिड बन जाता है तो दूसरे हमारे पास जो फेज होता है, जो दूसरा स्टेप होता है, उसका डिफरेंस होता है. तो पायरोविक एसिड जो है इस टाइप के अंदर वो अल्कोहल बनाता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. इफ यू टॉक अबाउट इट्स केमिकल इक्वेशन, दैट इज पायरोविक एसिड जो बना था फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो टू ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड will form ethyl alcohol and carbon dioxide. So it occurs in bacteria and yeast. While the next is the lactic acid fermentation. Where does it occur? It occurs in bacteria and yeast as well as in skeletal muscles of animals. Now, where does skeletal muscles present? They are present inside the animals in humans. When animals or humans perform or do some physical activity, so the lactic acid basically formed inside their skeletal muscle. It's mean it is also occurring inside the animals. So it occurs in skeletal muscle as well as in bacteria. So while if we talk about the ethyl alcohol, it was also only formed in the microorganism, bacteria and yeast. If we talk about the second step, the second phase, so now here the pyruvic acid is broken down into lactic acid, while in ethyl alcohol it was ethyl alcohol that was formed over there by the broken down of pyruvic acid. So that is the second difference. If we talk about the chemical equation, that is pyruvic acid is broken down into lactic acid. So there are two differences. Differentiate if we talk about the difference between ethyl alcohol and lactic acid fermentation. That in ethyl alcohol it only occurs in bacteria and fungi. If we talk about the lactic acid fermentation, it occurs in bacteria as well as in the skeletal muscles. And if we talk about the broken down of pyruvic acid, the second phase, so in ethyl alcohol, pyruvic acid is broken down into alcohol, while the lactic acid is in lactic acid, the pyruvic acid is broken down into lactic acid. Next one is the importance of fermentation. Now, what is the importance of anaerobic respiration? While we are breathing, we are taking in oxygen, we generate energy. Now, what is the importance कि हम absence of oxygen की क्या importance होगी, फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो प्रोसेस होता है तो उसकी importance कैसे है, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होती है. We will discuss this now. The importance of fermentation in organisms, living organisms.
So when life evolved on earth, जब से लाइफ स्टार्ट हुई है, जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, नो सप्लाई ऑफ फ्री ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज the trees are not so much, so oxygen is not in free state, but it was present in the combined state. So organisms respired anaerobically and got energy. तो organisms क्या करते थे, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, तो वो रेस्पिरेशन, तो उनको एनर्जी तो उन्होंने बनानी है फॉर देयर फिजिकल एक्टिविटीज, टू परफॉर्म देयर फिजिकल एक्टिविटीज. सो वो एनर्जी कैसे जनरेट करते थे? बाय द प्रोसेस ऑफ anaerobic respiration. They respired anaerobically in the absence of oxygen. Even today, there is a plenty of free oxygen available. Bacteria and fungi uses anaerobic respiration to get energy, so they are called anaerobes. So, the organisms that uses anaerobic respiration to get energy for their physical activities, to perform physical activities, those organisms are known as anaerobes. So आज के वक्त में today, even in today, that the bacteria and yeast are both are utilizing or using the anaerobic respiration. किस लिए? अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए. सो हम इसको क्या बोलेंगे? इन ऑर्गेनिज्म को एनारोब्स. Humans also provide energy to skeletal muscle through this process. और आज ह्यूमन भी प्रोवाइड करते हैं अपने skeletal muscles को एनर्जी. क्यों? Because during physical activities, the rate of oxygen going inside our body does not increase as our activity is increased. So जब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसको डिमांड को, ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता. इसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को जनरेशन के लिए लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है एकदम से. दैट्स व्हाई you feel cramping inside your muscles, that due to the anaerobic respiration, or you can say the fermentation. Importance of fermentation in industry. If we talk about the importance of fermentation in industry, so industry related, it means this process will be used in the industry to get some products for whom? For the welfare of mankind. So scientists use fermenting abilities of these fermenting abilities, the process of anaerobic respiration. So the scientists are using anaerobes, जो कि ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फंजाई या बैक्टीरिया, फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड. इंसान की बेहतरी के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. अब ना बैक्टीरिया से कौन कौन सी चीज़ बना रहे हैं? बैक्टीरिया से योगर्ट बन रही है, दही जिसकी आम मिसाल है, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया वो यूज़ होते हैं. उसके बाद चीज़ जो है वो बनाई जाती है. दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि बैक्टीरिया से हासिल होती हैं. उसके बाद यीस्ट की अगर बात करें, दैट इज अ टाइप ऑफ फंजाई. तो फंजाई से हम ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री जो है उसमें हमें मदद मिल रही है, हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जनरेट करते हैं. बेकिंग इंडस्ट्री, जैसे आपकी ब्रेड है, उसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल प्रोडक्ट की देखते हैं तो उसमें हमें यीस्ट जो है मोस्टली यूज करते हैं, हमीर जिसको बोलते हैं. देन aspergillus. So aspergillus जो है, that is also a fungi. So it is used for the production of soy sauce or different enzymes. अगर हम enzymes की बात करते हैं तो there are multiple enzyme. amylase enzyme जो इससे बनाया जाता है, pectinase है basically enzyme बनाया जाता है इससे. So multiple enzymes जो है वो generate कर रहे हैं today from the by using these anaerobes, fungi, bacteria, all are the microorganism. और ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस को यूज करते हैं? वो यूज करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को, फर्मेंटेशन को. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें कोई ना कोई जो प्रोडक्ट है वो जनरेट करते हैं. थैंक यू.